Hello students, myself I am Dr. Aarti Shah, JG College of Commerce, Head of the Department Statistics. Today I am going to deliver the lecture for SEM 4 students, their university syllabus unit number 4, that is time series. So we have 7 marks theory question and a 7 marks practical question for this unit. I hope you know the seriousness of this unit. Theory will be approximately 50% to learn and practical also will be 50% to be learned. Fine. We start with our subject and the topic. The topic is time series. So, here the word is time and series. You can split this word time, that is in context to either hours or days or months or years, and the series means it is the set of data collected and arranged in a chronological order. Now what do we mean by a chronological order? Chronological order means the value which is recorded first will be returned first and the value which is recorded second will be returned in the second order. So and so forth. This will continue till the data is recorded. So now you know what do you mean by a time series. Again, time series is the set of data recorded with respect to time and arranged in a chronological order in the form of a sequence, and hence it is known as a time series. तो आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? Definition of time series. Now let us have a graphical representation of one of this kind of series. You will see that the values of time, which is an independent variable, is taken on the x-axis and the variable y with respect to time is taken on the y-axis. So the values of time which is independent variable is taken on x-axis and the values of recorded data is taken on the y-axis. If the pair of these two values are plotted on the graph paper and we find to join the points, the graph may be a pattern like this. So you can see that if I join the first point with the last point, there is a constant increase in the values of the data. Similarly, we can have a data something like this, which is represented. Here it will be x-axis, that is time, and the variable y. A series represented in this pattern will have all the set of values, or you can say pair of values, in a decreasing order. And if we join the first and the last point of this data, you can see that there is a constant decrease. So now we can say that this is an increasing series and this is a decreasing series. Now, if you just see the diagram, you will see that there are certain ups and downs. Over a period of time, it is increasing. Over a period of time, it is decreasing. But what is the real data presentation? It has ups and downs over here. Now,
why these ups and downs are seen on the graph. There are 4 components of the time series which affect the values of the recorded data. So, we can say that a time series is mainly divided into 2 parts. One is long term variations and the second is short term variations. You can use the word fluctuations also. So, it is long term fluctuations and the second one is short term fluctuations. What do we mean by long term fluctuations? Long term fluctuations means the data shows change in the value over a long period of time, and the short term variations or fluctuations show the change in the values within a short period. Now, how to decide what is the long period and what is the short period? So, long period has a periodicity of greater than 1 year. What do we mean by periodicity? The reoccurrence of the same value or nearby value. तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस में आपको जो चेंजेस हैं वो 1 साल के बाद दिखेंगे या 1 साल से ज़्यादा के समय में दिखेंगे. और शॉर्ट टर्म का क्या है? द पीरियोडिसिटी इज ईदर लेस देन or equal to 1 year. So, here the changes will be seen within 1 year or at the end of 1 year. Now, these two divisions, that is long term and short term, can be subdivided into 2 parts. Each one is divided into 2 parts, that is over here you can see. The first one is known as trend, the second one is known as cyclical, the third one is known as seasonal, and the fourth one is known as irregular. So, now you can see that there are 4 components. So, I was explaining you what is the meaning of trend. Trend is the tendency of a series. Now, what is the tendency? Tendency is either to increase or to decrease. So, the tendency of a series either to increase or to decrease is known as the trend of the series. There are many more factors which are affecting the trend, but we are simply connected, or we are supposed to simply show and give what is the meaning of trend. So, trend is the tendency of the series either to increase or decrease. Second is cyclical variation or fluctuation. So, what is the meaning of cyclical? There is a cycle, so the changes in the value of the data will follow a cycle, and this cycle can be 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, so and so forth, because it is under a long term fluctuation. So, cyclical variation is the variation which is seen over a period of time, repeating its effect on the values of the data. Then the third one is a seasonal variation. वर्ड खुद ही बता देता है सीजनल मतलब क्या होता है. सीजन के हिसाब से वैल्यूज में चेंजेस दिखते हैं. सो सीजन कैसे होता है? हर साल आता है. सो पीरियोडिसिटी विल बी अगेन इक्वल टू 1 ईयर. या फिर
6 महीने में अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी चेंज होती है तो वो भी सीजनल वेरिएशन में आएगा. सो periodicity equal to 1 year or less than 1 year is under seasonal variation. And the fourth one is irregular variation. Word itself says that it is irregular. It does not follow a regular pattern. Like seasonal follows regular pattern, but the periodicity is greater than 1 year. And seasonal also is following a pattern and the periodicity is less than or equal to 1 year. Irregular does not follow any pattern. In short, आपको यहाँ जो चेंजेस दिख रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं ग्राफ में, वो किस वजह से हैं? ये 4 कंपोनेंट्स की वजह से है. द कंपोनेंट्स आर ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल एंड irregular. These components affect the values of your data and they show the changes in the values of your data. Fine. Now comes the next question. ये था आपका analysis of time series. तो जब आप analysis of time series के बारे में लिखोगे, then you will write that the time series is divided into 2 parts, subdivided into 4 parts and these are the 4 components. हर एक कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको अभी समझाया, वो भी आपको यहाँ लिखना होगा. ट्रेंड के बारे में, साइक्लिकल के बारे में, सीजनल के बारे में और इरेगुलर के बारे में. अब साइक्लिकल जो है, ट्रेंड आपको मैंने बताया कि वो टेंडेंसी ऑफ द सीरीज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. साइक्लिकल जो है वो कहाँ मिलता है आपको ऐसा वेरिएशन देखने के लिए? तो बिजनेस साइकिल्स में ये दिखता है. साइक्लिकल वेरिएशन इज सीन मोस्टली इन द बिजनेस साइकिल्स. यू विल सी दैट इन बिजनेस साइकिल्स many of the data is repeated over a period of time. Seasonal कहाँ दिखेगा? सीजन में, like the prices of umbrella in rainy season, the prices of sweaters in winter season. सीजन हर बार आता है, हर साल में एक बार आता है और उस समय आपको चेंजेस वैल्यूज में या उनके प्राइसेस में दिखेंगे. लास्टली है इरेगुलर वेरिएशन. इरेगुलर को मैंने जैसे आपको बताया, इरेगुलर का मतलब उस कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा. तो कौन से एग्जाम्पल्स उसमें आ सकते हैं? वॉर आ सकता है, फैमिन आ सकता है, सुनामी आ सकता है और एनी एपिडेमिक. ओके, सो एनीथिंग विच इज इरेगुलर, विच डू नॉट फॉलो अ पैटर्न, दैट कम्स अंडर इरेगुलर वेरिएशंस. So this was your second question, the analysis of time series. अब इसमें जब आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो सबसे पहले आप ट्रेंड को कैलकुलेट करते हो. ट्रेंड को कैलकुलेट करने के बाद आप सीजनल को कैलकुलेट करोगे और सीजनल के बाद इरेगुलर को कैलकुलेट करोगे. तो हमारा साइक्लिकल कहाँ गया? साइक्लिकल जो मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं उसमें साइक्लिकल वेरिएशन हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड और इरेगुलर के साथ इतना मिला हुआ है. इट इज सो कंबाइंड विद दिस 2 वेरिएशंस दैट वी डू नॉट हैव द मेथड फॉर सेपरेटिंग साइक्लिकल वेरिएशन. सो once again I repeat, when you analyze the time series, you will separate the trend first, you will separate the seasonal second and you will separate the irregular third. Cyclical हम नहीं कर पाएंगे. Let us take one example. अब उस example के लिए पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास कौन सी methods है. टाइम सीरीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है. We have 3 methods over here. Number 1, graphical method. Number 2, moving average method.
and number 3 is least squares method. Graphical method, we already saw that how to apply the graphical method. You have set of data, x independent variable, y dependent variable. They are taken on the respective axis and the pair is plotted on the graph paper. We join the pairs and we get the graph. So, graphical method is very easy, but it will not give you the idea what actually is the impact of these 4 components on the time series. So, this is the main drawback of this graphical method. The second method that we have is moving average method. This method is in your syllabus for 7 marks example in your question paper. Now the word is moving average. Average का मतलब क्या है? Average means total of the numbers divided by their number. यानी कि सिग्मा x अपॉन n आपके पास फॉर्मूला है ना? ओके. अब इसको जब आप मूव करते हो टाइम सीरीज में तो ये बन जाती है मूविंग एवरेज मेथड. दैट मीन्स from the first year in the data to the last year in the data. This is a moving average method. And in this moving average method, there are 4 type of examples. 3 yearly moving average method, 5 yearly moving average method, 7 yearly moving average method and 4 yearly moving average method. अब मैंने 3, 5 और 7 को साथ में बोला है और 4 को अलग से बोला है. 4 हालांकि 3 और 5 के बीच में आता है. Why did I do this? Because 3, 5 and 7 will have the same pattern of the result. Whereas the 4 yearly moving average will have a little bit different pattern in the answer. 3, 5, 7 का साथ में इसलिए है कि they are odd numbers. अगर मैं 3 yearly moving average कहूँ तो मिडल क्या होगा? सेकेंड. अगर मैं 5 yearly moving average कहूँ तो मिडल क्या होगा? थर्ड. और अगर मैं 7 yearly moving average कहूँ तो मिडल क्या होगा? फोर्थ ईयर. यानी कि अगर आप 3, 5 और 7 का मूविंग एवरेज अप्लाई करते हो तो आपको मिडल डायरेक्टली मिल जाएगा. क्योंकि मिडल क्यों चाहिए यहाँ पे? मिडल इसलिए चाहिए क्योंकि हम 3 वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़ और 7 वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं और उनको कंबाइन करके सिर्फ एक आंसर मिलता है. तो जब एक आंसर मिलता है वो मिडल में लिखा जाता है. सो वंस अगेन 3 का मिडल सेकेंड ईयर, 5 का मिडल थर्ड ईयर और 7 का मिडल फोर्थ ईयर रहेगा. सो दिस वॉज ईजी. 3, 5, 7. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. 3 का हम लेंगे, 5 और 7 का उसी पैटर्न से आपको कैलकुलेशन करना है. नाउ लेट मी टेक वन डेटा and solve this 3 yearly moving average over here. I am going to take one data and we will try to solve it by using a 3 yearly moving average method. The data is year and the variable y. We know that year is independent, so the variable y is a dependent value of the independent variable x. Years are 1983, 1984, 1985, 86, 87, 88, 1989, 1990,
91, 92, 93, 90, 94, 95 and 96. So how many years data is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. This is a 14 years data. Now we write down the variable y. The variable y is 12, 15, 18, 16, 20, 24, 22, 25, 28, 26, 30, 34, 32 and 34. You can see that there are ups and downs over here. Here it is increasing, then it decreases, again increasing, then decreasing. So as per our graphical method, you will see the ups and downs in the data recorded. Now I have to apply a 3-yearly moving average. So make a heading 3-yearly moving average. क्या करना है हमें यहाँ पे 3 year का हमें periodicity लेना है. So we will add the first 3 years data and we will try to find out the average. So the next column that we prepare is a 3-yearly moving average. What will be the total? 12, 15 and 18? The total will be 45. And because it is average, we have added 3 values over here. It will be 45 divided by 3, that comes to 15. And 3 को मिला के हमने एक वैल्यू ली है, एक आंसर मिला है, तो कहाँ लिखा जाएगा? मिडल में. What is the middle of this 3? The middle is 1984. So the answer will be 15 over here. Once again I repeat, 12 plus 15 plus 18 divide by 3. This means that your first year 1983 data is missing. So here when we take the moving average, we get some of the data missing in the beginning and some of the data missing at the end. यहाँ पे हमें सिर्फ 1 साल का data missing होगा. So we write down dash over here. Remember, it is dash. It is not 0, because if the earlier years are known to us, that is the earlier years data is known to us, we could have found out this answer. अब हमें क्या करना है? जो हमारा मेथड है वो आप पहली वैल्यू को इग्नोर करो या डिलीट करो और go to the next 3 values in the data. So it is 15 plus 18 plus 16, which comes to 49, and divide by 3 gives you 16.33. कहाँ पे लिखेंगे हम? इन 3 का मिडल है 1985, so it is 16.33. Now you will get a sequence of the answers. Then you leave the second one and go to the next 3. 18, 16, 20. See, I repeat my method again. You have to leave only one value and you have to introduce one value. एक को छोड़ के एक को इंट्रोड्यूस करते जाओ, ये है आपका मूविंग एवरेज मेथड. पीरियोडिसिटी 3 years का होगा तो भी यही है. If it is the 5 years periodicity, 7 years or 4 years, whatever is the periodicity, the method will be leave 1 year from the beginning and introduce 1 year from the bottom. Once again, you leave one value and go to the next 3, 16, 20, 24. The total comes to 54
divide by 3, that gives you 18. Leave one value, the next 3, 20, 24, 22, the total comes to 66, divide by 3, that comes to 22, and that will be for 19. This is for 1984, 85, 86, and this will be 1987. So now we find out the fourth value. कहाँ से होगा ये? आपने पहले मिस किया, आपका दूसरा आंसर 16.33 था, 18 को इग्नोर किया, the next 3 gave you 18. So we find out the fourth value. We will be deleting 18. It is 16, 20, 24. The total comes to 60 divided by 3, that comes to 20. The next is 16 deleted, and the next 3 total, it is 20, 24 and 22. Total is 66 divided by 2, 66 divided by 3, because here it is 3 years, and that comes to 22. Leave one, the next 3, 24, 22 and 25. The total comes to 71. Divide by 3, 23.67. Then leave one, the next 3, 22, 25, 28. That comes to 75 total. Divide by 3, which is 25. Leave one, the next 3, 25, 28, 26. Total is 79, and the average is 26.33. Then leave one, go to the next 3, 28, 26 and 30. So the answer will be 84. 84 divided by 3 gives you 28. Leave one, the next 3, 26, 30 and 34. Total comes to 90. 90 divided by 3 gives you 30. Leave one, the next 3, 30, 34 and 32 comes to 96. Divide by 3, that is 32. And the last 3, 34, 32, 34, total comes to 100, and the average is 33.33. You can see over here that the last year data is not being calculated because we don't have the further information. So here it is a missing value. अब ये जो आपने यहाँ पे आंसर्स कैलकुलेट किए हैं, ये आंसर्स बन जाएंगे ट्रेंड. Why? Because by this moving average method, you are directly getting the average answers for a specific year. Like ये जो 15 है वो किसके लिए है? 84 के लिए. 16.33 is for 1985, 18 is for 1986, the 20 is for 1987, so and so forth. Lastly, 33.33 is for 1995. So we have now separated the first component of the time series, and that is trend. So this will be known as the trend of the series. Okay. हमारा अगला कंपोनेंट क्या था सीरीज का? साइक्लिकल वेरिएशन. पर थ्योरी में हमने देखा कि साइक्लिकल वेरिएशन मूविंग एवरेज मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या सीजनल फ्लक्चुएशन. और सीजनल और इरेगुलर दोनों किस में पढ़ते हैं? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में. So here we assume that trend और cyclical separate हो चुके हैं, which means the long term variations are separated from my time series. And आप आगे थियोरी में मैंने आपको समझाया कि टाइम सीरीज दो पार्ट में डिवाइडेड है.
एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म आपको मिल गया है तो शॉर्ट टर्म कैसे करोगे आप? हाउ विल यू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म? यस, द शॉर्ट टर्म विल बी द गिवन सीरीज माइनस लॉन्ग टर्म. So now the next column will be short term fluctuations which can be calculated as y minus t. So you have the y values over here, you have the trend values over here, you can have the subtraction. Of course पहला वैल्यू मिसिंग है, जीरो नहीं है, तो आपका फर्दर जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब में आपका पहला वैल्यू मिसिंग रहेगा. आई रिपीट अगेन, प्लीज टेक अ नोट, इट इज मिसिंग नॉट जीरो. और अगर मिसिंग है तो आप सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज वाई द नेक्स्ट कॉलम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ऑल्सो विल कंटिन्यू with the missing value. So here it is missing 15 minus 15, which will be 0, 18 minus 16.33, 1.67, 16 minus 18 minus 2, 20 minus 20 will be 0, 24 minus 22 is 2, 20 minus 24 minus 22 is 2, 22 minus 23.67 is minus 1.67, 25 minus 25 will be 0, 28 minus 26.33 is 1.67, 26 minus 28 is minus 2, 30 minus 30 is 0, 34 minus 32 is plus 2, and 32 minus 33.33 is minus 1.33. Of course आपका last value missing रहेगा. So you saw over here that the first component separated is the trend along with cyclical assumed. So we have short term fluctuations left for the calculations. So, यहाँ आपने देखा कि आप 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे अप्लाई कर सकते हो. उसी तरह इसी डेटा में अगर मुझे 5 ईयरली अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं. कैसे? 5 ईयर मतलब क्या हुआ? आपको 5 साल का डेटा टोटल करना है, डिवाइड बाय 5. सो इट विल बी 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइड बाय 5. 5 का मिडल क्या होगा? 1985. मेथड क्या है आपकी? पहले को आप निकालोगे, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू विल बी एलिमिनेटेड एंड वन न्यू वैल्यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड. या फिर आप ऐसा कर सकते हो 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 डिवाइड बाय 5. देन 15 विल बी एलिमिनेटेड, 18 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22 डिवाइड बाय 5, एंड दिस विल कंटिन्यू till the last 5 values, that is 26, 30, 34, 32 and 34. अब मैंने जैसे आपको पहले समझाया था कि 3 साल का मिडल सेकेंड होता है, तो 5 साल का मिडल कौन सा होगा? थर्ड. तो इसका मतलब हुआ हमें पहली 2 वैल्यूज का आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि मिसिंग रहेगा. सो the pattern for the 5 yearly moving average will be 2 years data missing in the beginning and 2 years data missing in the end. Similarly, you can have a 7 yearly moving average. सिर्फ आपके numbers यहाँ बदलते हैं, method नहीं बदलता है. So 7 में क्या होगा? 12, 15, 18, 16, 20, 24 और 22. 7 वैल्यूज का आप टोटल करोगे, डिवाइड बाय 7, विच विल बी रिटर्न इन फ्रंट ऑफ 1986. यानी कि आपके पहले 3 साल का डेटा मिसिंग रहेगा. सिमिलरली दिस विल कंटिन्यू, एक को छोड़ना है, एक को इंट्रोड्यूस करना है. वैसे आप फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक जाओगे, एंड दैट विल बी the last 7 values
26, 30, 34, 32, 34, of course 28 से शुरू करोगे. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you start with 25. In short, आप 7 वैल्यूज़ का टोटल करोगे डिवाइड बाई 7, जिसका आंसर आपको मिलना शुरू होगा चौथे साल से. पहले 3 साल आपके मिसिंग वैल्यूज़ रहेगी. Now the most important part is we go to a 4-yearly moving average. Let us take the data for a 4-yearly moving average. Again, it will be year, the variable y, 4-yearly moving average and then short-term fluctuations. So, the years that we are given are 1996 to 2012. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2009, 2010, 2011 and 2012. So we listed the years. Now we will write the data. The y values are 406, 520, 936, 573, 488, 596, 1016, 638, 563, 677, 1089, 718, 645, 745, 1176, 798 and 714. Now, you can see that the years are given and the variable values are given. Apply क्या करना है हमें? 4-yearly moving average. So for the 4-yearly moving average method क्या रहेगा हमारा? The total of the 4 values divide by 4. But see that when I total the 4 values, what will be the middle? Of course, there will be no specific middle. So that is why in the beginning I told you that 3, 5, 7 are a particular same type of examples, whereas 4-yearly moving average is slightly different from these 3 odd numbers moving average method. So here we will have the total of 4 divided by 4, which gives you, let us write the total first. So total of 4 is 2435. Where do I write this 2435? It will be 1, 2, 3, 4 and in the middle. So it is 2, 4, 3, 5. So when you write in the examination, to avoid the clumsy and the dirty work, please see that after every year you leave one line. हर एक साल के बाद एक लाइन छोड़ देना ताकि आपका काम एकदम से क्लीन भी दिखे और आप भी कंफ्यूज ना हो. अगर इस तरह से लिखोगे, there are possibilities of confusion and making mistakes. So please see that I repeat once again. अगर आप 4-yearly moving average का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो आपको डेटा लिखते समय हर एक साल के बाद एक लाइन छोड़ देनी है. फाइन, मेथड हमारा वही है. एक को छोड़ोगे, नेक्स्ट 4 में जाओगे जिसका टोटल है हमारे पास 2517
and that will be again returned between the 2 years. Now, when these values are between the 2 years, not for a specific year, we are not calculating the trend over here. जिसका मतलब हुआ ये आपका ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ आपकी एवरेज वैल्यूज है. तो ये डिफरेंस है आपका ऑड और इवन नंबर ऑफ ईयर्स मूविंग एवरेज में. वी गो टू द नेक्स्ट वन. 520 को आप छोड़ोगे और नेक्स्ट 4 में टोटल होगा. इट इज 2593 अगेन बिटवीन द 2 years. Then leave 936, the next 4, total is 2673. Leave 1 year, the next 4, the total is 2738. And this will continue till the last 4 years, that is these 4 years, and the total for them is 3433. You can calculate the middle years over here now. हर एक बार आपको करना क्या है, एक का वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट 4 में जाना है, एक को छोड़ के नेक्स्ट 4 में जाना है. सो हियर इट विल बी 2738 के बाद होगा 2813, देन द नेक्स्ट विल बी 596 को छोड़ोगे, द नेक्स्ट विल बी 2894. The next will be 2967, then it will be 3047, then it will be 3129, the next one will be 3284, and one more value, that is 3364. So ये हो गए आपके 4 साल के वैल्यूज के टोटल मूविंग एवरेज के हिसाब से. अब ये हमें किसी वैल्यू के सामने या किसी ईयर के सामने नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू गो फॉर वन मोर स्टेप, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी, इफ आई कंटिन्यू विद द 4 ईयरली, व्हाट हैपन्स, 1 2 3 4 टोटल किया, मिडल होगा मेरा 4 का मिडल होगा यहाँ पे, जिसका मतलब मुझे 1999 से वैल्यू मिलना शुरू होगा. तो मेरा लॉस कितना हुआ, 96, 97 और 98 की वैल्यूज का. नाउ इफ आई वांट टू रिड्यूस माय लॉस, आई कैन. कैसे? ये जो 2435 टोटल है वो कहाँ पे है आपका, 97 और 98 के बीच में, यानी कि 98 के ऊपर. सो योर टोटल 2437 इज हियर, योर टोटल 2517 इज हियर. तो एक वैल्यू आपकी 98 के ऊपर है और एक वैल्यू 98 के नीचे है. अगर इन दोनों का आप एवरेज करते हो तो आपको मिलेगा आंसर 98 से. दैट मीन्स द लॉस विल बी फॉर ओनली 2 years. तो मेरा यहाँ पे पर्पस भी सर्व होता है और मेरा लॉस भी कम होता है. माई पर्पस इज ऑल्सो सर्व्ड for finding out the moving average, that is the trend component, and I am reducing my loss also. So the next step will be a 2 yearly moving average. The 4 yearly moving average will now be reduced to a 3 yearly moving average. So my 4 yearly is now reduced to 2 yearly moving average. So we take the total of first 2, divide by. Now because we have the totals over here, it will be divided by 8. यहाँ पे 4 का टोटल किया था, यहाँ पे 2 का टोटल, 4 into 2 is 8. So now we will divide the total of these two by 8. So it is 2435 plus 2517 divided by 8, which gives us 619, and that is for the year 98. The first 2 years data will be missing.
Now leave 1, the next two total divide by 8. That comes to 638.75. Leave 1, the next two total divide by 8 will give you 658.25. Then leave 1, the next two total divide by 8 gives you 676.37. Leave 1, the next two total divide by 8, that is 693.87. So, you can continue the same thing for all the years, and this values, that is this 2 yearly moving average, is for a specific year, that is 98, 99, 2000, 2001, 2002, so and so forth till 2010, 11 and 12 will be missing. तो अब हम इन वैल्यूज को लिख सकते हैं as the trend values. So now you can see the difference between the 4 yearly moving average and the 3, 5 and 7 yearly moving average. And the next column will be short term fluctuations, which will be y minus t. पहले 2 साल का missing है. The third year is 936 minus 619, and that gives you the short term fluctuations. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस तब कैलकुलेट करना है अगर आपको कहा गया है तो, अदरवाइज दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द कंपोनेंट ट्रेंड. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सीजनल इंडाइसेस. हमने पहले सीखा मूविंग एवरेज मेथड से टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस एंड द ट्रेंड ऑफ द सीरीज. अब हम सीखेंगे सीजनल इंडाइसिस. क्यों सीजनल इंडाइसिस? क्योंकि इस मेथड और मूविंग एवरेज को मिला के हमें तीसरा मेथड सीखना है, यानी कि द अदर टू कंपोनेंट्स आर टू बी सेपरेटेड, दैट इज सीजनल वेरिएशन and the irregular variation. So here we are going to study the seasonal indices. Now remember, in your question paper, the seasonal indices question will not carry more than 4 marks. Please आप इसको differentiate करना, क्योंकि सीजनल वेरिएशन अगर आपको पूछा गया है तो वो 7 मार्क का रहेगा, और अगर सीजनल इंडाइसिस पूछा है तो वो 4 मार्क का रहेगा. बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में, आप ये गलती मत करना. प्लीज डोंट मेक मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, सीजनल वेरिएशन और सीजनल indices. See the marks allotted and that will remove your confusion. Let us take one example for seasonal indices. The data given will be, it is year, season 1, season 2, season 3 and season 4. The years are 2009, 2010, 2011 and 2012. The first season values are 65, 68, 70 and 60. The second season values are 58, 63, 59, 53. The third season values are 56, 63, again 56 and 51. And the fourth season values given are 61, 67, 52 and 58. This is the simplest example of this chapter. There are 3 more rows to be calculated.
The first one will be the average, then it will be correction factor, and the third one calculated will be seasonal index. क्या करना है सिंपली इसमें आपको सीजन वाइज वैल्यूज का टोटल करना है डिवाइड बाय देयर नंबर विच विल बी एवरेज. So it is 65 plus 68 plus 70 plus 60. Total will be 263. Divide by 4 gives you 65.75. I draw a line over here so that you can easily identify. Similarly, second season 58 plus 63 plus 59 plus 53. Total comes to 233. Divide by 4, that is 58.25. थर्ड सीजन का उसी तरह से करना है 56 plus 63 plus 56 plus 51, total is 226. Divide by 4, 56.5. And the fourth season 61 plus 67 plus 52 plus 58, total comes to 238. Divide by 4, 59.5. So we calculated the averages for each season. Now remember, this data can be extended to 12 months of the year. It can be extended to 7 days of a week. यानी कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स भी हो सकते हैं और आपके पास 12 कॉलम्स भी हो सकते हैं. बट दैट विल नॉट इफेक्ट योर मेथड. आपको सिंपली एवरेज करना है. फॉर दिस एग्जाम्पल 4 एवरेजेस आर देयर. इफ इट इज 7 days you get 7 averages, and if there are 12 months you get 12 averages. The next step is finding out the correction factor, or you can say as grand average. It can also be known as grand average. How do we find out this grand average? ये जो हमारे पास averages है उनका भी average करना है. यानी कि 65.75, 58.25, 56.5 और 59.5 का टोटल करके कितने से डिवाइड करना होगा? डिवाइड बाय 4. अगर आपके पास 7 days है तो डिवाइड बाय 7, और अगर आपके पास 12 months है तो डिवाइड बाय 12. सो वी कैलकुलेट ओवर हियर ग्रांड एवरेज which is equal to 65.75 plus 58.25 plus 56.5 plus 59.5 divide by 4, and the answer will be 60. So इन चारों का टोटल करके आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 60. So what did you get the grand average value as? 60. अब हमने यहाँ पे 4 सीजन्स को मिला के एक आंसर ऑब्टेन किया है. So that will be common for all the seasons. अगर 7 days है तो that will be common for all the 7 days, और अगर 12 months है तो it will be common for all the 12 months. So we write over here grand average as 60, 60, 60 and 60. The last value that we need to find out is seasonal indices, and the seasonal index formula is average divided by grand average into 100. Now why did we multiply this by 100? क्योंकि हमारा बेस ईयर इंडेक्स नंबर क्या होता है? 100. So it will be 65.75 divided by 60 into 100, which comes to 109.6. Similarly, it will be 58.25 divided by 60 into 100, that is 97.1.
56.5 divided by 60 into 100, 94.2. 59.5 divided by 60 into 100, that comes to 99.17. So this is how you can calculate the seasonal indices. Average, that is the total of the values in each season, divide by their number. Grand average, it is the average of the averages, and the seasonal index, that is average divided by grand average into 100. So now you have learnt two things. One is moving average method and the second is seasonal indices. इन दोनों को मिला के अब हम तीसरा concept पढ़ेंगे, that will be finding out the seasonal variation, and lastly the irregular variation, so that your given series will be totally analyzed. So the data that we are given over here is something like this. It is year and the seasons are summer, monsoon and winter. The years are 1993, 1994, 1995 and 1996, and the summer values are 120, 145, 160, 170. The monsoon values are 140, 160, 168, 174, and the winter values are 145, 165, 172 and 176. The first thing that we have to do over here is, इस डेटा से हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते. मूविंग एवरेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास सीरीज होनी चाहिए. तो इस टेबल डेटा को हमें सीरीज डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट द ईयर विल बी रिटर्न and the seasons will be mentioned in our series. Remember, this is the seasonal variation. So here the seasons are important, not the year. So season को आप importance दोगे, साल को importance देने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So for moving average method, we know that this table data will be not useful. So we have to convert it into a series data. Let us convert it. So we have year and the variable y. Year is 1993. Now this year is divided into 3 seasons. So seasons are important. It will be summer, monsoon, winter. Don't leave any line after the series. 1994 summer, monsoon, winter. 1995 summer, monsoon, winter. 1996 summer, monsoon and winter. So now you can see over here that this year and the seasons are now listed in the form of a series. Let us write down the y values. It is 120, 140, 145, again 145, 160, 165, 160, 168, 172, 170, 174 and 176. अब आप देख सकते हो कि आपका पूरा टेबल कन्वर्ट हो चुका है सीरीज में. Here the periodicity will not be mentioned. It is already in the data. कितने सीजन में हमारा डेटा डिवाइड हुआ है या साल डिवाइड हुआ है? 3 सीजन में. तो
आपको लेना है 3 सीजनल मूविंग एवरेज।